Hello and welcome to SGSH Publications. So today we are having Vinit Ambat sir with us. Firstly, I would like to congratulate you sir कि आपकी book हमारी publication के साथ में publish हो चुकी है and now it is available on all the platforms. So how are you feeling sir? Thank you so much, ma'am. And I'm feeling very excited. So this is my first book. I had that inclination for writing a few years back. Basically, back of the mind there was that, and but I was thinking which genre to write, when to publish, and all those things. But I came across SGSH Publications, and everything went smoothly. And now I'm really excited, and I hope the readers enjoy my book. Yeah. Very amazing sir. तो सबसे पहले तो हमारी audience को बताइए what is there inside your book? क्या कुछ हमें जानने को मिलने वाला है and how much interesting it is going to be? सो बेसिकली दिस बुक जैसा कि मैंने बोला कि साईफाई जॉनर का है, तो ये जॉनर वेरी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जॉनर एंड आई थिंक दिस बुक इज ऐसा कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस नहीं है, बट येस इट इज अबाउट द एज ऑफ 16 प्लस बेसिकली, बिकॉज इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हार्डकोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी है, लाइक क्वांटम फिजिक्स, टाइम ट्रैवल एंड ऑल, बट बेसिक फिजिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स भी है इसमें. So basically, this is a collection of 25 sci-fi stories covering a lot of topics based on quantum physics, time travel, then this nanotechnology, then Mars tourism, जो Elon Musk कहते रहते हैं Mars tourism and all. Yes, So yes. वो angle भी इसमें covered है basically. So it's a collection of sci-fi stories. So किसी को interest होता है physics में, किसी को interest होता है कि chemistry में, ऐसे kind of. So this covers actually a lot of aspects, even mathematics. So combination of mathematics and sci-fi is quite rare. But I try to stitch them together in this book, and definitely I hope that the readers will enjoy it. Yeah. Very amazing, sir. So writing fiction is like कुछ तो उसमें भी आपको इश्यूज आते हैं, कुछ आपको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं. सो हाउ डिड यू फेस दोस कॉम्प्लिकेशंस और किस तरह के चैलेंजेस आपके सामने आए? सो हालांकि ये साइंस फिक्शन है, लेकिन एज एन ऑथर आई शुड टेक केयर दैट ये कंप्लीटली फार फेच ना हो, कंप्लीटली अनरियलिस्टिक ना हो, थोड़ा ऑडियंस जो रीडर जो है कनेक्ट भी कर सके. साइंस फिक्शन इज समथिंग विच इज इन द फ्यूचर, विच इज नॉट करेंटली देयर इन द प्रेजेंट. थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगे, बट इट इज बेस्ड ऑन हार्डकोर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स ओनली. So I try to blur the lines or overlap the lines between science and fiction. So I would say, जैसे मैं बोलता हूँ लोगों को, there is more of science and less of fiction. तो उसके लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ा. So in the book people will find that there are around 30 or 40 odd references, जो कि it is spans across books, news articles, YouTube videos and so on and so forth, and even Google Scholar articles basically. Yeah. तो हार्डकोर रिसर्च किया है, और रिसर्च के बेसिस पे मैंने ये साइंस फिक्शन stories लेके 25 stories, and it's all original, completely from my mind only. Yeah. Very amazing, sir. So now I would like to ask you कि आपका डेली रूटीन क्या है, किस तरह से, मतलब आप इतने क्रिएटिव हैं, आप इतने क्रिएटिवली यू थिंक सो मच एंड यू राइट द फिक्शन. सो ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक पीसफुल साउंड माइंड चाहिए. सो हाउ हैव यू प्लान्ड योर डे एंड हाउ डू यू डू ऑल योर स्टफ्स? Yeah, I'm glad that you asked this question because it's very important. Because 3-4 years back, मेरा जो रूटीन है, डेली रूटीन, और यूँ कहूँ कि जो लाइफस्टाइल है बेसिकली, वो उसमें काफ़ी मैंने बदलाव लेके आया. For example, my morning routine consists of doing yoga, reading books a lot. So I'm a voracious reader basically. So in the year 2022, I had completed around 60 books in a particular year basically. तो बिकॉज नाउ करंटली आई एम वर्किंग आफ्टर ब्रेक, सो इतना टाइम मिल नहीं पाता. बट रीडिंग इज समथिंग विच आई टेक वेरी सीरियसली, एंड इट कवर्स अक्रॉस जॉनर्स, लाइक देयर इज साइंस फिक्शन, देयर इज फिक्शन एंड लॉट. तो वो एक चीज है. मेडिटेशन करता हूँ, एफर्मेशन जर्नलिंग करता हूँ. सो दिस मॉर्निंग रूटीन मेरा स्ट्रिक्ट है, एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ माई क्रिएटिव आइडियाज एंड क्रिएटिविटी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स राइटिंग एंड इमेजिनिंग थिंग्स has been driven by my routine basically. तो मैं लोगों को भी एडवाइस करूंगा कि प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन फॉलो करें, बिकॉज इफ यू विन द मॉर्निंग यू कैन विन द डे एंड यू कैन विन योर लाइफ. सो दैट्स द थिंग. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज डे टू डे लाइफ में मतलब बिकॉज ऑफ वर्क मैं राइटिंग कर नहीं पाता, बट जो भी राइटिंग करता हूँ मैं वीकेंड्स में करता हूँ. और वीकेंड में अगर कंसिस्टेंटली राइटिंग करूँ मैं, या कोई भी राइटिंग करे, definitely they can reach their goals of writing a book and all. Yeah. Amazing, sir.
Okay. So, do you believe in meditation? Yeah, surely. In fact, 3 4 years मैंने रेगुलरली करना स्टार्ट किया था मेडिटेशन. आई मस्ट कन्फेस दैट बहुत साल पहले भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन कभी हुआ नहीं. एक दो हफ्ते के बाद मैं छोड़ देता था. Yes. बट इस 3 4 years बैक, ऐसे सेट जैसे मैंने अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस लाए, तो योगा एंड मेडिटेशन को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ, और ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ कि एवरी डे करूँ विदाउट एनी ब्रेक, एंड उसी टाइम पे करूँ. दैट सो इट हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, calmness of mind, and creative thinking, which I have applied in writing books and many other aspects of my life. Yeah. Okay. So, there comes a thinking called, like, there's a concept called spirituality. So, do you believe in it, and what is your perception of spirituality? How do you take it? Yeah, so spirituality, I believe that has a lot of layers, and the perspective which I believe in is mindfulness. That is believing that there is something higher than just materialistic things. Yes. So, of course, wealth creation and materialistic things are important, but इंसान को एक एक अलग पर्सपेक्टिव से भी लाइफ को देखना चाहिए, माइंडफुलनेस और वेलनेस के हिसाब से, मेंटल हेल्थ के हिसाब से. दिस ऑल आर कनेक्टेड बेसिकली. सो आई ऑल्सो बिलीव इन दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन, नॉट फ्रॉम द मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बट ऑल्सो कौन से क्वालिटीज इंसान में होनी चाहिए. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिंक विद द स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट. तो इसमें भी काफी मैं कुछ मैं रीडिंग करता हूँ, यूट्यूब वीडियोस काफी देखता हूँ. सो दिस इज द पर्सपेक्टिव व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर. Great, sir. Okay, so yes, it's really nice talking to you. Like, I'm getting so many new things, like so many new things to learn from you. So now I'd like to ask you, like, when you are kind of relating science too much to the fiction, so I would like to know, like, what is your background? Like, what have you studied, and maybe what are you doing right now, professionally, other than writing? Yeah, that's a good question, because a lot of things I have done historically, I mean academically. So I have done my engineering, of course, and after doing my graduation in science, then I did my MBA in finance. So if you listen to my education background, it might sound like a mocktail, but that's how it is. So I done my MBA finance, but recently, like a few years back, I took a break from my career. So I basically work in aviation sector, and before the break, also I worked in aviation. Now also I have rejoined aviation sector, and I am currently residing in Gurgaon for my work purposes. So yeah, so that few years back I took a break to do my masters in University of Limerick, which is in Ireland. So that masters I did in business analytics. So that particular course is a 1 year course, and it gave me a whole new perspective towards life. And I'm not exaggerating, because a lot of my interest in writing, which was like a fragmented, and which was not taken which had not taken shape earlier. But this course, I went the grind which I went through in this course basically gave me the motivation to think holistically, and think about creativity basically, and how to bring your ideations, how to bring your vision into fruition by working in different projects. So that was very interesting thing basically. So that was in business analytics, that master's course. So currently I'm working in aviation, as I mentioned. So yeah, that's about my professional thing. Yeah. Okay, so you said that you took a break of like of 3 to 4 years, right? So Yeah, yeah. I would like to know, like, why did you take that break? What came into your mind? Yeah, so basically, after like this pandemic thing, which had taken a toll, not just on me but for many people, so I felt that I should like connect to myself within, in my inner self, and to explore, and to grow personally, not just professionally. Because earlier I was just trying to grow professionally in my life, Yeah. and ignoring all the personal aspects, and ignoring my personal growth, spiritual growth. But I took a break to reflect on myself, and to create a plan, chalk out a plan for my future. What are the things I want to do apart from work in my personal life? So writing is one of these things, one of the things, and also so I'm a voracious reader, as I mentioned before, and also I have a YouTube channel in which I create videos, self-help videos, which cater to different audiences, and people have liked that basically. So these were the things I did in my break, and I hope to continue to do so basically. Yeah, so that's the thing. Amazing, sir. Okay, so as you said about self-help, videos that you make. So like
if we talk about our education system, it kind of teaches us to grow professionally, of course. But where does it lack that we need to, impart this knowledge apart from like educationally हमें वो knowledge नहीं मिल रही है, right? कि किस तरह से हमें personally grow करना है, खुद से कैसे connect करना है, and that we are seeking in the self-help books or maybe from the videos or from so many other places. So I would like to ask you, if you were given a chance, then how would you improvise the education system to make it really better for us, like so that we can actually grow not only in terms of some for the sake of money, but in reality we would grow and अपने आप को इतना skillful बना सके कि हाँ हम सच में कुछ भी achieve कर पाए. So yes. Sure, definitely. So it's a good question. I think it's very important because right now and this all rat race thing. तो Yes. यहाँ पे स्टूडेंट्स मतलब एजुकेशन सिस्टम में बोला जाता है कि हाँ ये करना है, ये पढ़ना है और इसमें करियर बनाना है बेसिकली. सो माइंड्स आर बिट रिजिड बेसिकली. एटलीस्ट मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में था, सो इट वाज काइंड ऑफ मोर रिजिड एक्चुअली. But I would believe that it has to be made flexible by inculcating the habit of reading, by inculcating different self improvement पर्सनल इंप्रूवमेंट रूटीन्स और जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस है. काफ़ी लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि रियलाइज़ करते हैं कि काफ़ी टाइम बाद लाइफ में चेंजेस लाते हैं लाइफ में एंड दे थिंक दे ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट थिंग्स आर टू बी डन टू इम्प्रूव इन देयर पर्सनल लाइफ. बट ये अगर पहले से एजुकेशन के टाइम पे अगर अगर बताया जाए, इफ द टीचर्स टेल, then definitely it will work wonders in the students life. It will help them in their studies also because that balance is very important. To read books, to take care of their mental health, because mental health ये जो है चीज पहले भी था, just that people were not willing to talk about that. It was a kind of a taboo, but after pandemic it has become a talk of the town basically, if I may say so. So इस चीज के बारे में पहले से ही एड्रेस करना स्टूडेंट्स को, इसका इंपॉर्टेंस, इसका अवेयरनेस ये ज़रूरी है. और एज़ आई सेड अगेन, जस्ट रिआइटरेटिंग कि बुक रीडिंग का हैबिट हो, जितना कम उम्र में अगर ये हैबिट इनकलकेट कर सके, विच इज़ वेरी गुड बिकॉज़ इट गिव्स पर्सपेक्टिव और थिंकिंग का जो होराइज़न है वो स्टूडेंट्स का एक अर्लियर एज से ही बढ़ सकता है. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या Amazing, sir. So now I would like to ask you to recommend some good books for us to read. Like, because ओके. I'm also a very, I'm also very much interested in reading. So yes, it would be very great अगर आप कुछ recommend करें to read, which is interesting as well as going to give us some learning, tips as well. डेफिनेटली जो ऑडियंस है उसको तो मैं पहले पहले तो मैं अपना ही बुक बोलूँगा व्हिच इज़ माय ओन बुक, टाइम्स अहेड, व्हिच इज़ साइंस फिक्शन बुक. सो अगेन इट इज़ जस्ट टू मेंशन दैट जस्ट एक फिक्शन नहीं है, इट गिव्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, इट क्लियर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट्स को भी इंट्रोड्यूस करता है. सो एज़ आई सेड इट ब्लर्स द लाइन्स बिटवीन साइंस एंड फिक्शन. सो एक नॉलेज बेस को इम्प्रूव कर सके, देन इट इज़ नथिंग लाइक इट. आई विल बी मोर देन ग्लैड बेसिकली that and give perspective to the my wonderful readers. तो वो readers वो एक है. And then some of the fiction books, because I read different genre books, so basically some of the fiction, rather non-fiction books would be The Power of the Subconscious Mind, Yes. by Dr. Joseph Murphy. वो है. Then this book is there, The Richest Person in Babylon, जो financial aspects life के cover करते हैं. तो how to create wealth by not being dramatic, by getting the basics getting the basics right in life. तो Richest Man in Babylon वो एक अच्छा book है basically, and by a book by Robin Sharma. So the monk who sold his Ferrari, ये एक बहुत famous book है. But that is not the book I am recommending. I am recommending the book, The 5 AM Club. तो 5 AM क्लब, ऑफ कोर्स ये चीज, ये बुक बताता है कि किस टाइम पे, आई मीन अर्ली अर्ली अराइजिंग इन द मॉर्निंग, उसके क्या बेनिफिट्स है और एक रूटीन बनाने का क्या बेनिफिट होता है. ऑफ कोर्स आई कन्फेस, आई डोंट वेक अप एट 5 AM, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू वेक अप अर्ली एंड एज आई मेंशन आई ट्राई टू फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन. तो उससे लाइफ में कितने चेंजेस, क्या चेंजेस होते हैं, और ऑफ कोर्स मैंने खुद पर्सनली मैंने बेनिफिट किए हैं. जो कुछ भी ऑथर ने बोला है, जो कुछ भी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने को बोला है ऑथर ने, मैंने खुद फॉलो किए, एंड डेफिनेटली इट हैज वर्कड वंडर्स. So these are some of the books. And again, sci-fi books, if I return to sci-fi books recommendation, डॉक्टर मिचियो काकू एक जापानीज ऑथर है जो काफी साइंस फिक्शन बुक्स लिखते हैं. सो फ्यू ऑफ द बुक्स रिसेंटली मैंने पढ़े हैं उनके, वो है पैरेलल वर्ल्ड्स और द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी. अगेन एक विजन के बारे में प्रेजेंट करते हैं, टेराफॉर्मिंग ऑफ प्लैनेट्स
एंड ऑल दोज थिंग्स एक ब्यूटीफुली उन्होंने प्रेजेंट किया है बुक. ऑब्वियसली मेरे बुक में भी टेराफॉर्मिंग के बारे में चैप्टर्स हैं, एंड ऑफ कोर्स नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड फ्रॉम हिज बुक, बट डेफिनेटली मैं डेफिनेटली किसी ना किसी तरह से तो मैं इंस्पायर्ड हुई उनसे. एंड yeah, so that is some of the book, yeah, one of the books which I wanted to. Very amazing, sir. It was really nice interacting with you. So now I would like to ask you, how was your experience with SGSH publication, and if you have any suggestion for us so that we can improve our services. श्योर, डेफिनेटली. सो एसजीएसएस सबसे पहला चीज़ तो मैंने एक्सपीरियंस किया था कि ऑनेस्टी, बिकॉज काफ़ी बार ऐसा होता है कि पीपल कंपनीज जस्ट बड़ा चढ़ा के बोलते हैं उनके बारे में, एंड देन ट्राई टू सेल देयर सर्विसेज. बट व्हाट आई लाइक्ड अबाउट दिस कंपनी इज द ऑनेस्टी एंड द विलिंगनेस टू इम्प्रूव, विलिंगनेस टू टेक सजेशंस, जो कि बहुत कम कंपनीज में देखने को मिलता है, सर्विस प्रोवाइडर्स में. सो दैट इज समथिंग विच आई कुड रिलेट टू. एंड अदर थिंग इज द क्वालिटी एंड द प्रॉम्प्टनेस ऑफ सर्विस. तो उन्होंने जो भी कमिट किया जिस टाइम पे डिलीवर करेंगे सर्विस, उससे पहले ही हर एक सर्विस बिफोर टाइम ही डिलीवर किया है. So punctuality, that is also something which I personally give priority to and can relate to definitely. So I definitely liked working with SGSS Publications. I would recommend all the viewers of this channel to engage with them in their future any endeavors definitely. So that is something. और suggestions तो अभी ऐसे as such कुछ नहीं है, सिर्फ good wishes for the future projects basically, because as Divya ma'am mentions always that the tagline you have, that is spread goodness, spread happiness. तो spread goodness और spread happiness का जो है tagline वो carry forward करे, बस वही suggestion है basically. Thank you so much, sir. And yes, so do you have any message for our audience that you would like to give them? Sure. So again, I would talk about my book. So enjoy the book. This is not like science fiction. ऐसा नहीं है कि कुछ हाई साईफाई कुछ हाईफाई कुछ है जो मतलब समझने में डिफिकल्टी होगा, कुछ नहीं. मैंने जितना सिंपली, मैं कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ा ऑथर नहीं हूँ जो कॉम्प्लिकेट करके लिखूंगा, बट डेफिनेटली दिस विल डेफिनेटली कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, विद अडल्ट्स, विद एवरीवन बेसिकली, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स तो फंडामेंटल है, और उस कॉन्सेप्ट्स को लेके कैसे अप्लाई करना है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव दैट mere knowledge is not power. Knowledge when applied wisely, there is only power. तो वही knowledge को और research को मैंने apply करने की कोशिश की है इस book में, in form of a vision for the future. So I hope people can relate to it, connect to it, and also spark their curiosity. ना ऐसा नहीं कि मैं चाहूँगा कि ये बुक पढ़े और फिर बंद कर दे लोग. ऐसा नहीं, मैं चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट्स उसमें और डीप डाइव करें और डेल्व इन करें, ताकि उनको और उनका नॉलेज बेस और बढ़ जाए. So definitely that's what something which I wanted to share. Yeah, that's a message for the readers. Yeah. Thank you so much, sir. It was really nice interacting with you. Got to learn so many new things from you. And yes, Thank you so I much. hope our audience would have also enjoyed this interview a lot. So thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you.